Hello, lovely people, good wishes, and a warm welcome to all. Now, in the previous lecture, we discussed a method to find out the inverse of a matrix using row and column operations. Now, we will be using the inverse of matrix to solve the system of linear equations. So, this method is known as matrix method. Before, we have studied a method using determinants, which was known as Cramer's rule, to find out the solution of a system of linear equations. Now, in this case, we'll be using the inverse concept to find out the solutions. So, for that, let us say we are having a system of linear equation. We have named it A. Say. So, we are having a system of linear equation. There are three equations in three variables. Now we have classified the system of linear equations into two categories. Either the system can be a homogeneous system or a non-homogeneous system. Now the system will be a homogeneous system when all the constant terms are zero. But at least if one of them is non-zero, then the system becomes a non-homogeneous. तो homogeneous system में जितने भी constant terms हैं वो zero होंगे and non-homogeneous system में इन सभी constant term में से कोई at least एक ऐसा टर्म हो जो नॉन जीरो होगा. नाउ सबसे पहले मैट्रिक्स मेथड की हेल्प से इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को मैट्रिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे. यहाँ पर हम लोग इनवर्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और इनवर्स जो है वो मैट्रिसेस के लिए यूज होता है. तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग मैट्रिसेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. उसके लिए हम क्या करते हैं, हम थ्री मैट्रिसेस बनाएंगे. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टर्म्स हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कोफिशिएंट्स हैं ai's, bi's and ci's, which are the coefficients of the variables x, y and z. These are simply numbers. Secondly, we have constant terms here, d1, d2, d3. These are also numbers. This is the second type of term we are having here. And third thing, we are having x, y and z. Three variables here. तो इन वेरिएबल्स की एक मैट्रिक्स बनेगी, इन कांस्टेंट टर्म्स की एक मैट्रिक्स बनाएंगे एंड विद द हेल्प ऑफ दीज कोएफिशिएंट्स वी विल बी फॉर्मिंग अ मैट्रिक्स. नाउ बाय रीअरेंजमेंट ऑफ दीज मैट्रिसेस वी विल रिप्रेजेंट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स. तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये जितने भी कोएफिशिएंट्स थे, जिस तरह से हमने एक डिटर्मिनेंट डी फॉर्म किया था डिटर्मिनेंट्स के केस में बाय यूजिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, सिमिलरली यहाँ पर जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उनकी हेल्प से हम लोग एक मैट्रिक्स बनाने वाले हैं, विल कॉल एज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इट विल बी बिकॉज यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है, इट इज थ्री इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स. Number of variables are 3 and number of equations are 3. This is a system of 3 equations in 3 variables. तो इस वजह से यहाँ पर जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पर बनाएंगे हम, that will be a 3 order square matrix. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी कोएफिशिएंट्स हैं सबसे पहले इन कोएफिशिएंट्स को कॉलम वाइज लिख लेंगे and we will make a matrix out of that. The first column of this coefficient matrix will be consisting of the coefficients of x variable. देन सेकेंड कॉलम में हम लोग y वेरिएबल के जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उन्हें लिख देंगे एंड थर्ड कॉलम विल कंसिस्ट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ z. इन तीनों इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स के, उनको कॉलम वाइज लिखकर हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे व्हिच इज नोन एज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड लेट अस नेम दिस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एज द मैट्रिक्स A. तो यहाँ पर हमने A मैट्रिक्स फॉर्म की व्हिच इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स व्हिच विल लुक लाइक दिस. And this formed from the coefficients of the variables in the system of linear equations. Next हम लोग वेरिएबल्स की हेल्प से एक मैट्रिक्स बनाएंगे. यहाँ पर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, तो हम तीनों वेरिएबल्स को कॉलम वाइज लिखकर एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे. And to find out the solution of this linear equation, this means कि हमें x, y and z की वैल्यू फाइंड आउट. And in terms of matrices, we have to find out the value of x, because x मैट्रिक्स जो है वो वेरिएबल से मिलके बनी है, इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स. तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि हमें बेसिकली दिस मैट्रिक्स वी हैव टू फाइंड. नाउ आफ्टर दिस जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी d1, d2, d3, इनकी हेल्प से इनको कॉलम वाइज लिखकर हम एक और मैट्रिक्स बनाएंगे. यहाँ पर d1, d2, d3 को कॉलम वाइज लिखकर हमने मैट्रिक्स B बना दी. Now by using these three matrices A, X and B, the system of linear equations can be represented as AX is equal to B. तो
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो मैट्रिक्स फॉर्म है, दिस इज ax is equal to b. A is the coefficient matrix. This is the matrix which we have to find out, which is formed from the variables, and b is the matrix of constant term. इस तरह से ये जो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है उसे हमने डायरेक्टली एक मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, which will be looking like this: ax is equal to b. Now our main motive is to find out the value of x. तो जब भी हम लोग मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इसी तरह से जो भी सिस्टम दिया होगा तो हम लोग एक मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, और उस मैट्रिक्स इक्वेशन के बाद तो वेरिएबल्स की मैट्रिक्स होगी एक्स, उसे हमें फाइंड आउट करना। नाउ हेयर अगर मैं इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की बात करूं, तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट जो होगा उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है एंड नॉन 0 भी हो सकती है। डिपेंडिंग अपॉन दैट we will be having the unique solution or infinitely many solutions or no solutions for this system of linear equations. तो इस system of linear equations का solution exist करेगा या फिर नहीं करेगा, वो depend करेगा coefficient matrix के determinant पर, उसकी value क्या आएगी। Now based upon that we have two cases here. First of all, when the determinant of matrix A is non-zero, जब coefficient matrix का determinant non-zero होगा, then क्या होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, दैट मींस कि दिस मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मींस कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देन फ्रॉम दिस इक्वेशन ax इज इक्वल टू b वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो बेसिकली जब हमने लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को एक मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमारा मोटिव यही था कि हमें x मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना, because it is consisting of all the variables. x मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के बाद हमें वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले फर्स्ट केस लिया कि जब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का वो नॉन जीरो होगा। दिस इंप्लाइज कि A इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है, एंड बेस्ड अपॉन दिस फैक्ट वी विल बी फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ A इनवर्स आउट ऑफ दिस इक्वेशन ax इज इक्वल टू b। तो उसके लिए x फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन को A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई। अगर हम इस इक्वेशन को A इनवर्स से इस तरह से प्री मल्टीप्लाई करते हैं, देन आफ्टर रीअरेंजिंग दिस A इनवर्स A को मैंने इकट्ठा लिख लिया, देन x अलग कर लिया, दिस A इनवर्स B। A इनवर्स A is always equal to I, so this will be x is equal to A इनवर्स B। तो जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, तो उस केस में हमारे पास x की एक ही वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के। तो x is equal to A inverse B is the unique solution. So in this case, when determinant of coefficient matrix is non-zero, the system of linear equation is consistent and it is having a unique solution which is given by this equation x is equal to A inverse B. Now the next case is when coefficient matrix का determinant zero आएगा, then what will be the system of linear equations? क्या वो consistent होगी या फिर inconsistent? Now, when determinant of A is 0, then the system can be consistent or inconsistent, and it will depend upon a factor known as adjoint of A into B. तो जब determinant of A 0 आ जाएगा, then हम लोग एक term find out करेंगे which is adjoint of A into B. Adjoint of A into B को हमें find out करना है and उसकी value देखनी है। अगर तो adjoint of A into B एक null matrix आती है, then we can say that system will have either no solution or it will have infinitely many solutions. लेकिन अगर adjoint of A into B non-zero आया, then we can directly say that system is inconsistent and it will have no solution. Determinant of A 0 आने के बाद हमें एक term find out करनी है. Based upon this term, we can say whether the system of linear equations is consistent or inconsistent. तो अगर इस particular matrix की वैल्यू नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आती है, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। If this particular matrix comes out to be a null matrix, then the system can be consistent or inconsistent. So if we conclude whatever we have discussed till now, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा यूज करके हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स A फॉर्म करनी है, वेरिएबल मैट्रिक्स X फॉर्म करनी है,
एंड द कांस्टेंट मैट्रिक्स P फॉर्म करनी है, जिनकी हेल्प से हम इस लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को एक मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे एंड दिस मैट्रिक्स इक्वेशन विल बी Ax is equal to B. आफ्टर फॉर्मिंग दिस मैट्रिक्स इक्वेशन हमें क्या करना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है. Now this determinant can have two values, either it can be 0 or it can be non-zero. अगर determinant of A non-zero आता है, then we can directly say that the system of linear equation will be having a unique solution, and that unique solution is given by this matrix equation x is equal to A inverse B. But अगर determinant की value 0 आई, then we have to find another term which is adjoint of A into B. Adjoint of A into B term find out करने के बाद ये पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स आएगी. अगर ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आती है, then the system will have no solution, system will be inconsistent. अगर इस टर्म की, इस मैट्रिक्स की वैल्यू नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गई, then we can say that the system can have no solution or infinitely many solution. Both the possibilities are possible. और अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया, जो भी लीनियर सिस्टम का इक्वेशन डिस्कस किया, इट वाज ऑल फॉर द नॉन होमोजीनियस सिस्टम, जहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म्स थी d1 d2 d3, all of them were not zero, at least one of them was non-zero quantity. तो ये जो भी कंक्लूजन हमने फाइंड आउट किया है, ये सब एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए वैलिड है. नॉन होमोजीनियस सिस्टम के केस में नो सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी होती है. whenever we are having a homogeneous system of linear equation, तो इस टाइप का ये जो भी कंक्लूजन है वो किस तरह से चेंज होगा वो हम देखते हैं. तो फॉर अ होमोजीनियस सिस्टम व्हाट विल हैपन इज d1 d2 d3 0 हो जाएगा. इस टाइप के अगर एक जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो इसमें अगर कांस्टेंट्स d1 d2 d3 को मैं 0 कर देती हूँ, देन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी नोन एज अ होमोजीनियस सिस्टम. तो होमोजीनियस सिस्टम अगर होगा तो d1 d2 d3 तीनों 0 हो जाएंगे एंड द मैट्रिक्स फॉर्म्ड आउट ऑफ दीज थ्री विल बी d1 d2 d3 मैट्रिक्स विल बी मैट्रिक्स B. तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स B होगी होमोजीनियस सिस्टम के केस में इट विल बी 0. तो यहाँ पर भी दो केसेस होंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे, द मैट्रिक्स A. अब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A कैन बी 0 और नॉन 0. यहाँ पर भी दो केसेस होंगे. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज 0, देन उस केस में क्या होता है, उस केस में नॉन होमोजीनियस सिस्टम के केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है एंड दैट यूनिक सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू A इनवर्स B. तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉन 0 आया तो उस केस में वी आर हैविंग द सॉल्यूशन x इज इक्वल टू A इनवर्स B. यहाँ पर होमोजीनियस सिस्टम के केस में क्या हुआ कि जो मैट्रिक्स B थी वो नल मैट्रिक्स के इक्वल हो गई, तो उस केस में द मैट्रिक्स X becomes the null matrix. If X matrix becomes the null matrix, this will imply that all the elements of matrix X, which are X, Y, and Z, all these elements will become 0. Hence, X is equal to 0, Y is equal to 0, and Z is equal to 0 will be the solution for this homogeneous system whenever the coefficient matrix is non-zero. So this type of solution where all the unknowns are 0, this type of solution is known as trivial solution. अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो उस केस में हमें होमोजीनियस सिस्टम का एक ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा. लेकिन जो हमारा केस है दैट सेज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0. अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है देन हम लोग एक टर्म फाइंड आउट करते हैं व्हिच इज एडजॉइंट ऑफ A इनटू B. नाउ होमोजीनियस सिस्टम के केस में B की वैल्यू नल मैट्रिक्स के इक्वल हो गई, तो अगर एडजॉइंट ऑफ A इनटू B की वैल्यू फाइंड आउट करें बाय पुटिंग B इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, देन वी कैन गेट दिस फैक्टर एज 0. और हमें पता है एडजॉइंट ऑफ A इनटू B इज इक्वल टू जब 0 हो तो उस केस में अगर मैं नॉन होमोजीनियस सिस्टम की बात करूं, नॉन होमोजीनियस सिस्टम में मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो कोई सॉल्यूशन नहीं था या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे थे. लेकिन होमोजीनियस सिस्टम के केस में क्या होगा, होमोजीनियस सिस्टम के केस में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 आया और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A इनटू B 0 आ जाता है, then the system will be having infinitely many solutions. क्योंकि नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस सिस्टम के केस में नो सॉल्यूशन की जो पॉसिबिलिटी है वो रूल आउट हो जाती है, बिकॉज इन केस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0 will always be the solution of the system. This is type of system of linear equation. तो यहाँ पर जो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा वो हमेशा होमोजीनियस सिस्टम का एक सॉल्यूशन रहेगा, जिस वजह से अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो भी जाती है देन
system will definitely have infinitely many solutions. System will then also remain consistent. So homogeneous system of linear equation is always consistent. फिर चाहे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो या फिर नॉन 0 हो, दोनों केसेस में हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर ऑब्टेन होता है. दिस वाज अबाउट द होमोजीनियस सिस्टम. नॉन होमोजीनियस सिस्टम में किस तरह से वर्क करेंगे, होमोजीनियस सिस्टम में किस टाइप का प्रोसीजर रहेगा, वो सब हमने देख लिया. Now we will be using the concept of inverse and whatever theory we have discussed in now to solve some of the problems. Now let us see how we will be proceeding while solving the problems. सबसे पहला स्टेप हमारा होगा कि हमें सिस्टम को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म मींस all the variable terms are on one side of the equation and the constant term will be on another side. तो यहाँ पर जो भी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे उन्हें हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना. स्टैंडर्ड फॉर्म में उन्हें एक्सप्रेस करने के बाद हम 3 मैट्रिसेस फॉर्म करेंगे A, X and B so that कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग एक मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करें. So the system of linear equation will get converted into a matrix equation which is like this, ax is equal to b. तो उसके लिए मुझे एक मैट्रिक्स A, X and B. All these 3 matrix we have to find out. Matrix A will be the coefficient matrix क्योंकि यहाँ पर x, y और z के coefficients को कॉलम वाइज लिखने पर हमें मिलेगी. देन जो भी वेरिएबल टर्म्स होंगे उनको कॉलम वाइज लिखकर हमें एक मैट्रिक्स x मिलने वाली है एंड जो भी कांस्टेंट टर्म्स होगी उन्हें हम कॉलम वाइज लिखेंगे तो हमें कॉलम मैट्रिक्स b मिलेगी. यहाँ पर x एंड b आर स्पेसिफिकली द कॉलम मैट्रिसेस. क्यों? क्योंकि हमें इस टाइप की एक मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना. यहाँ पर a into x है. As we know that matrix multiplication is non-commutative and matrix multiplication को डिफाइन होने के लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है. तो इस टाइप की कंडीशन यानी कि ax जो है ये प्रोडक्ट डिफाइंड हो, सिर्फ उसी के लिए x और y को हमने एज अ कॉलम मैट्रिक्स यूज किया because then only this system of linear equation can be written in the form of this type of matrix equation. ax and b मैट्रिसेस फॉर्म करने के बाद जब हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस टाइप की मैट्रिक्स इक्वेशन में रिड्यूस कर दिया, then in the next step we will be finding out the value of determinant of coefficient matrix A. तो A का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना है जिससे हमें ये पता चलेगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट. A डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ A comes out to be non-zero then we can say that system has a unique solution and that unique solution will be given by x is equal to A inverse B. डायरेक्टली अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो सिस्टम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. तो उस केस में हमें A इनवर्स को फाइंड आउट करना है. A इनवर्स को हम B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस विल गिव मी द यूनिक सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कम्स आउट टू बी जीरो तो उस केस में जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट हो भी सकता है एंड नहीं भी हो सकता. इसके लिए हमें क्या करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी 3 वेरिएबल्स होंगे या जितने भी वेरिएबल्स हमें सिस्टम में दिए होंगे उनमें से किसी एक वेरिएबल को चूज करेंगे. नाउ हियर वी आर स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द सिस्टम ऑफ 3 वेरिएबल्स इन 3 इक्वेशंस. 3 लीनियर इक्वेशंस होंगी एंड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स विल आल्सो बी 3. तो इस टाइप की लीनियर इक्वेशन में क्या होगा कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कम्स आउट टू बी जीरो देन हमें क्या करना है, 3 वेरिएबल्स यहाँ पर हैं, तीनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल को हम किसी कांस्टेंट टर्म k के इक्वेट कर देंगे. लेट अस से हमने x, y और z में से किसी एक वेरिएबल x को चूज कर लिया, उसे हमने कांस्टेंट k के इक्वेट कर दिया. नाउ x को k के इक्वेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इन 3 इक्वेशंस में से कोई भी 2 इक्वेशन सिलेक्ट कर लेंगे. लेट अस से हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन सिलेक्ट कर ली. अब फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस में हम लोग x की ये वैल्यू k पुट कर देंगे जिससे हमारे पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी 2 वेरिएबल्स में. y एंड z वेरिएबल्स में हमें 2 इक्वेशंस मिलेंगी आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to k in any 2 इक्वेशंस आउट ऑफ these 3 इक्वेशंस. के बाद हमें क्या करना है, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y एंड z इन टर्म्स ऑफ k. तो इस तरह से x, y एंड z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ k. आफ्टर दैट हमें क्या करना है, जो भी रिमेनिंग इक्वेशन थी, द इक्वेशन नंबर 3, रिमेनिंग इक्वेशन में x, y एंड z की वैल्यूज पुट करनी है इन टर्म्स ऑफ k सो दैट हमें ये पता चलता है कि क्या ये वैल्यूज इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है या फिर नहीं करती.
ये चीज चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, अगर तो थर्ड इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट करने के बाद तो थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, then we will say that the given system is consistent and it will be having infinitely many solutions. But if the third equation is not satisfied, then the given system of linear equations will be having no solution. The system will be inconsistent. इस तरह से हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं while solving the problems. Now let us move towards the problem part. Let us say we are having the first question here. हमारे पास यहाँ पर एक system of linear equations given है. इसके केस में हमें solution find out करना है. That means we have to find out the values of the variables x, y and z. इस टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं दे आर नॉट ऑल जीरो. All of these constant terms are non-zero. This means this type of linear equation is a non-homogeneous system. तो यहाँ पर let us say this is equation number 1, this is equation number 2 and this is equation number 3. And let me name this type of system of linear equation as the system A. तो यहाँ पर हम प्रोसीड करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम ये होगा कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एक मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना. उसके लिए हमें क्या करना है, हमें 3 मैट्रिसेस की जरूरत होगी, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स ए. We will be forming these 3 matrices so that we can reduce the system of linear equation to a matrix equation. तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स A फॉर्म करेंगे. कोफिशिएंट मैट्रिक्स A will be formed out of the coefficients of each of these variables. तो यहाँ पर x के coefficients की बात करूँ तो these are 1, 4, 6. I will write it down column wise. Then the second column of matrix A will be the coefficients of y. This will be 1 minus 3 minus 1 and the third column will consist of 1, 2, 4. इस तरह से हमने यहाँ पर coefficient matrix A form की. Now after that we will be forming the matrix X. Matrix X क्या होगी, यहाँ पर 3 variables है x, y and z. We will write down these 3 values x, y and z. These 3 variables x, y and z when written column wise it will give me the matrix. Similarly हमें third matrix B form करनी है which is again a column matrix and which will be consisting of all the constant terms here. This will be 2, 11, 10. इस केस में matrix A, X and B are these type of matrices. After forming these matrices we can directly write that this system of linear equations is reduced to a matrix equation given as Ax is equal to B. We have to find out this matrix X in order to get the solution of this system. तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा ताकि हमें पता चल सके कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है. के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी फाइंडिंग आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स A. This determinant will be looking like this. This is a 3-order determinant which can be evaluated easily through simple calculations. So after evaluating this, we are getting here determinant of A as 0. यहाँ पर इस determinant of A की value हमारे पास 0 आ गई. Now because the system is a non-homogeneous system and the determinant of A has come out to be 0. This means the system is either consistent or inconsistent. यानी कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. यहाँ पर प्रोसीड करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप वुड बी, यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं x, y and z. So first of all we will be choosing any one of these variables and we will put these variables to a constant value. उस टाइप के प्रोसीजर के लिए let us say we have chosen the variable z. मान लेते हैं कि z को हमने k पुट कर दिया, k is a constant here, any number. So let us say because determinant of a has come out to be 0, तो उसके बाद हम कैसे प्रोसीड करेंगे कि हमने इन तीनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल z को हमने एक किसी कांस्टेंट k के इक्वेट कर. let us say z is equal to k. Now what we will do here is z की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 and 2 में पुट करेंगे. When we will put this value of z in equations 1 and 2, we will get the following. 1 minus 3 minus 1 and 2 minus 3 will be equal to 0. This means the system is non-homogeneous system.
what we will be getting here is, यहाँ पर हमें x plus y plus k is equal to 2 मिलेगा, and second equation would become 4x minus 3y plus 2k is equal to 11. तो हमारे पास इस टाइप की दो इक्वेशंस फॉर्म हो गई आउट ऑफ दीज इक्वेशंस 1 and 2 आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ z here. So these two equations can also be written as x plus y is equal to 2 minus k and 4x minus 3y is equal to 11 minus 2k. तो इस तरह से हमारे पास two equations आ गई in two variables x and y. Now we have to solve these two equations to get the values of x and y in terms of k. उसके लिए हम लोग फिर से सेम मैट्रिक्स मेथड का यूज करने वाले. तो यहाँ पर we are having two equations in two variables. We will be finding out the solution of this system of linear equations using the matrix method itself. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स A चाहिए होगी. तो let us say the system B, the B system. इस B system के लिए the coefficient matrix we will be denoting it as A dash. Let us say this A dash will be written like this: 1, 4, 1 and minus. From the coefficients of x and y, we have written down this coefficient matrix like this. And then we will be forming a matrix x out of the variables. यहाँ पर दो ही variables हैं x and y. So writing them down in a column, we will be getting the matrix x and the matrix B dash. Let us say this is the matrix x dash here for the system B, and we will be getting the matrix B dash as 2 minus k and 11 minus 2k out of the constant terms we are having. तो इस तरह से हमने इस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को भी इस तरह की एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया. A dash x dash is equal to. Now for finding out the solution of this system, first of all we will be having the determinant of A dash. A dash का determinant find out करते हैं. This will come out to be minus 3 minus 4 minus 7 which is non-zero. यहाँ पर जो coefficient matrix है A dash for the system B वो non-zero आए. This means this system is having a unique solution, and that unique solution x dash is given by inverse of A dash into B. तो यहाँ पर A dash का inverse ले लेंगे multiplied by B. This will be giving me x dash, and यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x and y की वैल्यू आ जाएगी in terms of A. Now to find out the x dash, we will be first finding out the inverse of A dash. Inverse of A dash will be adjoint of A dash divided by determinant of A dash. और determinant of A dash हमारे पास क्या आया था, the determinant of A dash came out to be -7. Adjoint of A dash is a 2 cross 2 matrix. 2 cross 2 matrix के लिए by determinant of A dash will be, and अगर हम यहाँ पर adjoint of A dash की बात करें तो directly 2 cross 2 matrix के लिए adjoint of A dash कैसे find out करेंगे. First of all, we will be interchanging the diagonal elements. This will be minus 3 and 1, and changing the signs of off diagonal elements, we will be getting adjoint of A dash. A dash inverse यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 3, 1, 4, minus 1 and 1 by 7 will be out. Now after we have found out the inverse of A dash matrix, the matrix x dash would become A dash inverse into B. This means 1 by 7 into 3, 1, 4 minus. This will be multiplied by the matrix B dash. B dash matrix is this: 2 minus k, 11 minus 2k. Now we just have to multiply these matrices and divide it by 7. So we will be getting x dash as, after simply multiplying these matrices, we will be getting x dash here as 1 by 7 into 5k minus 17, and this would be 2k plus. Now this matrix x dash was equal to x y. तो यहाँ पर simply multiplication से हमारे पास x dash की वैल्यू ये आ गई. From this we can find out the values of x and y in terms of k. So z was equal to k. From this equation, x comes out to be minus 5k plus 17 divided by 7. Y comes out to be minus 2k plus 3 divided by 7.
So after solving this, we are getting the values of x, y and z in terms of k like this. Now what we have to do is x, y, z की जो भी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की, इसे हमें इक्वेशन नंबर थर्ड जो कि रिमेनिंग इक्वेशन थी उसमें पुट करना है, सो दैट वी कैन चेक whether this equation 3 is satisfied or not. यहाँ पर x, y, z की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन नंबर थर्ड में रखें, then what we will be getting here is 6 multiplied by minus 5k plus 17 minus plus 2k plus 3 by 7 and plus 4k is equal to 10. Now after solving this expression, this is expression in terms of k. Expression को अगर हम solve करते हैं, and what we will be getting here is 105 divided by 7 is equal to 10. तो इस टाइप का जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है उसे इवेलुएट करने के ये आएगा 105 by 7. 105 by 7 can never be equal to 10. This means ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, it is not satisfied from the values of x, y and z, and hence we can say that the system has no solution. The system of linear equation is inconsistent. It is not having any solution because the third equation is not satisfied by the values of x, y and z. So the next question we are having now is, we are given a system of linear equation. The system of linear equation का solution हमें find out करना. Now here the constant terms are all not zero. All of the constant terms are non-zero. This means this type of system of linear equation is a non-homogeneous linear equation. इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस सिस्टम को एक मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, and that matrix equation should look like this: ax is equal to b. सिस्टम को मैट्रिक्स इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए हमें तीन मैट्रिसेस की हेल्प चाहिए होगी. फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी द मैट्रिक्स A, which is known as the कोफिशिएंट मैट्रिक्स. इन मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशिएंट्स को कॉलम वाइज लिखेंगे. फर्स्ट कॉलम विल कंसिस्ट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x, this will be 2, 3 and 4, and the second column will consist of coefficient of y, this will be -1, 2 and 5, and then third column will consist of e, -1 and -5. कोफिशिएंट मैट्रिक्स A बनाने के बाद हम लोग मैट्रिक्स X बनाएंगे, दिस द मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स. यहाँ पर तीन वेरिएबल्स हैं हमारे पास x, y and z. Writing them column wise, we will get the matrix X. After that, the constant matrix B from these constant terms 5, 7 and 9. A, X and B matrices are like this. Then we can reduce the system of linear equation to a matrix equation Ax is equal to B. Now whether this system is having no solution or infinitely many solution or only a unique solution, it will be decided by the determinant of this coefficient matrix A. तो यहाँ पर coefficient matrix A का determinant अगर हम लोग find out करें, तो this will look like 2, 3, 4, -1, 2, 5, 3, -1, -1. So this will be the determinant of matrix A. You can solve this determinant, this three order determinant by any of the method. So after solving this, we are getting here this determinant A comes out to be 0. The matrix A का determinant 0 आता है, this means system of non-homogeneous equations can be consistent or it can be inconsistent. So the matrix A का determinant 0 आया है, then we will proceed with. यहाँ पर हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं. इन तीनों वेरिएबल्स में से हम किसी एक वेरिएबल को चूज करेंगे and we will assume its value to be a constant. So let us say that we have assumed this. अगर z की वैल्यू k हमने assume की, उसके बाद हमें क्या करना है? Let us say this is the equation number 1, this is the equation number 2, and this is the equation number 3. So now what we are doing is, यहाँ पर हम z की वैल्यू को फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे. तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन में अगर हम z की वैल्यू को पुट करते हैं, then the first equation will be like this: 2x minus y plus 3k is equal to 5, and the second equation would become 3x plus 2y minus k is equal to 7. तो इस तरह से हमारे पास दो equations आ गई from the equations 1 and 2 by putting the value of z in these. अब इन दोनों equations को हमें solve करना है.
to find out the values of x and y in terms of a. सिस्टम को, ये भी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग फिर से मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे, बट बिफोर दैट वी विल बी एक्सप्रेसिंग दिस सिस्टम इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर अगर मैं ओरिजिनल सिस्टम की बात करूँ, लेट अस से दिस ओरिजिनल सिस्टम इज सिस्टम ए। ये ओरिजिनल सिस्टम ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ी इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करने की, बिकॉज वेरिएबल टर्म्स वर ऑन वन साइड एंड ऑल द कांस्टेंट टर्म्स वर ऑन अदर साइड। बट यहाँ पर ये जो सिस्टम है, लेट अस से दिस इज द सिस्टम बी। द सिस्टम बी जो है, इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना होगा। तो उसके लिए द सिस्टम बी कैन बी रिटन लाइक दिस: 2x minus y is equal to 5 minus 3k, and this 3x plus 2y is equal to 7 plus k. So this becomes our system B, जिसे हमें solve करना है by using matrix method. तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस सिस्टम को रिड्यूस करना पड़ेगा to a matrix equation. We need three matrices here. The first matrix is, let us say it is coefficient matrix A dash, formed from the coefficients of these variables. फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशिएंट्स होंगे 2 and 3, सेकंड कॉलम में y के कोफिशिएंट -1 and this gives our coefficient matrix for the system B. Then the x dash matrix of unknowns for the system B. This will consist of only two values, x and y, and then B dash will be 5 minus 3k and 7 plus k. The matrix formed from these constant terms. सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा, वो हमें पता चलेगा ए डैश के डिटर्मिनेंट। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस विल बी 4 प्लस 3, दिस इज 7। तो यहाँ पर जो ए डैश होगा वो नॉन जीरो हमें मिला, ए डैश की वैल्यू नॉन जीरो आ गई। दिस मीन्स कि द सिस्टम बी इज हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन, and that unique solution x dash would be given by the inverse of a dash into। बेसिकली यहाँ पर जो सिस्टम नंबर b है उसके लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें 7 मिली है, एंड a dash x dash and b dash की वैल्यू हमें पता है। we just need to find out the inverse of a dash. So for the system b, x dash is equal to a dash inverse into b dash. This is the solution of this system which is a unique solution. तो उसके लिए मुझे a dash का inverse find out करना है। The inverse of a dash would be 2 cross 2 मैट्रिक्स का inverse find out करने के लिए हम क्या करेंगे, this will be equal to adjoint of a dash divided by determinant of a. Determinant of a dash was 7, but adjoint of a कैसे find out करेंगे, just by interchanging these diagonal elements and changing the signs of this will be the adjoint of a dash, and this we have got the matrix a dash. X dash would be what, x dash यहाँ पर हमारे पास आएगा a dash inverse which is 7 into 2 1 3 2 into matrix B which is 5 minus 3k and 7 plus k. तो यहाँ पर इन दोनों matrices को हमें multiply करना है, and after multiplication of these matrices we are getting x dash as a 2 cross 2 matrix, and this would look like 5k plus 17. It is basically a column matrix, minus 5k plus 17 divided by 7, and the next entry would be 11k minus divided by। तो इस तरह से हमारे पास x dash matrix आ गई, and x dash matrix was equal to xy. So from here we have got that z की वैल्यू हमने k assume की, तो उस केस में हमें x की वैल्यू मिली minus 5k plus 17 divided by 7, and we got the value of y as 11k minus 1 divided by 7. तो यहाँ पर k की टर्म्स में हमने x, y and z तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू हम लोग थर्ड इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। This equation 3 will become 4 into minus 5k plus 17 divided by 7. We are putting the values of x, y and z in equation number 3. This will be 5 into y will be 11k minus divided by 7, and this will come out to be like this. Now
So now we will be solving this whole of this expression. अगर हम इस पूरे expression को solve करें, then what we will be getting here is 7 को हम लोग right hand side पर लेकर जाते हैं, this will be 63, and k की terms में इस पूरे expression को अगर हम solve करें, तो here we will be getting, जब हमने x, y and z की वैल्यू पुट की इन इक्वेशन नंबर 3, देन हमें ये पता चला कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर बोथ इक्वल. दिस मीन्स द इक्वेशन 3 इज सेटिस्फाइड बाय द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z. अगर x, y और z की वैल्यू से इक्वेशन नंबर 3 सेटिस्फाई हो रही है, दिस मीन्स द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम इज हैविंग infinitely many solutions. These infinitely many solutions are given by these values of, अगर x की वैल्यू ये हो, y की वैल्यू ये हो and z की वैल्यू k हो, then this system will be having infinitely many solutions given by these three values of x, y and z. और k जो है वो कोई भी नंबर है and k की different values put करके हमें x, y, z के different combinations मिलेंगे, and in this way we will be getting infinitely many solutions for this system. Hence the system of non-homogeneous system is consistent. Now let's move to another question. We are having again a system of linear equations and we have to solve this. We have to find out the values of x, y and z. Now in this case, all these constant terms are zero. This means this type of system of linear equations is a homogeneous system of equation. And secondly, यहाँ पर ये जो system है, it is already in the standard form because all the variable terms are one side and the constant terms are on the other side. तो ये system homogeneous system है तो ये always consistent होगा ही. But now we have to find out whether this system is having infinitely many solutions or a unique solution. तो उसके लिए सबसे पहले इस system को हम लोग एक matrix equation में reduce करेंगे. For that we will be finding out the coefficient matrix A, which will be like this: 1, 1 and 3. First column will consist of coefficient of x. Second column will be having the coefficients of y, 1, 0 and 1. The third column will be having the coefficients of z, which will be 1, 2 and 1. So in this way we are having this coefficient matrix A. Now after this, the matrix X, which is known as the matrix of unknown, x, y, z, there are three variables. So writing them column wise, we will be getting matrix X. And then after this, the matrix B will be formed from the values 0. यहाँ पर matrix B जो होगी, it is a null matrix because it is the system of homogeneous equations. Now ये homogeneous equation का जो system है, it is having infinitely many solutions or no solutions. उसके लिए हमें क्या करना होगा, A का determinant हम find out. The determinant of A would look like this. This is a 3-order determinant. You can solve it by yourself by using some of the properties or by direct explaining or by using the SARS rule. तो जब भी हम इस A determinant को solve करते हैं, then what we get here is we get the value 4. The determinant of A comes out to be the 4, but it is a non-zero value. जब A का determinant non-zero आ गया, that means कि this system is having a unique solution. इसका जो unique solution होगा, a unique solution for a general system is given by x is equal to A inverse B. Because originally हमें x matrix की value ही find out करनी थी. तो जो unique solution है, that is given by A inverse into B. Now A inverse matrix is as it is, but the B matrix here is a null matrix. So A inverse into null matrix give me the, यहाँ पर जो unique solution यहाँ पर आया हमारे पास homogeneous system के लिए, this comes out to be x is equal to 0. This implies x is equal to 0, y is equal to 0 and z is equal to 0. This is the trivial solution for the given system of homogeneous system. So the values of x, y, z which are satisfied by these linear equations simultaneously are all 0. So now let's move to another example. We are having a system of linear equations. इसका solution हमें find out करना है. That means we have to find out the values of x, y and z. If we look towards the system carefully, then we find that this system is a non-homogeneous system of linear equations. So यहाँ पर non-homogeneous system है, so it can be consistent or inconsistent. So it will be having
either a unique solution or infinitely many solutions or no solution at all. So let us find it out. तो सबसे पहले हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, एक मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म करेंगे. So for that we need to find out three matrices A, B and X, where A is a coefficient matrix which is formed from the coefficients of these variables X, and then we will be finding out the matrix X which is जो भी variables थे उन्हें हमने column wise लिखा. Then we got the matrix X. Then we have to find out the matrix P of constant terms. Constant terms को column wise लिख लेते हैं. Then we will be having the matrix B here. Now whether this system is having a unique solution or infinitely many solutions or no solutions at all, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Determinant of A we need to find. So now if A is this matrix, X is this matrix, B is this matrix, then this system of linear equations can be equivalently written as AX is equal to B. The system of linear is equivalent to a matrix equation AX and B, where AX and B is written like this. So now we have to find out the determinant of A. Determinant of A would look like, now after finding the value of this determinant, we will be getting here A. This is a simple calculation. We can find the determinant of order 3 and then we will be getting the value of A determinant as A. Now it all depends upon this value of A, whether the A will be equal to 0 or A will not be equal to 0. So we take here some cases. So now we are having the first of all case number 1, when A is not equal to 0 and A is a non-zero number, then the determinant of A will also be non-zero. तो अगर यहाँ पे determinant of A non-zero हुआ, then the system of linear equation will be having a unique solution, and that unique solution will be given by X is equal to A inverse B. So now we have to find out this unique solution. For this we need to find out A inverse. What will be A inverse? A inverse will be equal to adjoint of A divided by determinant of. So now we need to find out the adjoint of A. Adjoint of A क्या होता है? हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे. तो सबसे पहले हम लोग कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाते हैं. कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए वी नीड टू फाइंड आउट द कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट. तो एलिमेंट 1 का जो कोफैक्टर होगा, दिस विल बी 6a minus 2a 4a. This element 1 would be having the cofactor as 4a minus 2a. This would be minus 2a, and then this element will be having the cofactor minus a. इस particular number 2 का जो cofactor होगा, this would be minus a, and then this number 3 का जो cofactor होगा, this would be 2a minus a. This number 2 will be having a cofactor 0. a का जो cofactor होगा for this element, the cofactor will be minus 1. For this a, the cofactor would be 0, and for this 2a, the cofactor would be. This was the matrix of cofactors. अब इस cofactors की matrices का अगर हम transpose ले लेते हैं, then we will be getting adjoint of A. So the adjoint of A comes out to be, so this is the adjoint of A. Now using this adjoint of A value in this equation, what we will be getting is, यहाँ पर determinant of A is A. So this matrix A inverse would come out to be 4 minus 2 minus 1 1 0 minus 1 by A 0 and 1 by. This is the inverse of A. Now we need to put this value of A inverse and B in this equation. So X will be come out to be 4 minus 2 minus 1 is 1 1 0 1 by A 0 1 by A will be minus multiplied by B. A inverse multiplied by B 1 2 4. Now by simple multiplication, this X comes out to be, this would be 2 minus 4a, and the second column would be 0. The third column would be 4 by a minus 1. So this is our matrix X. Matrix X was equal to x, y and z. Hence, from this we have got the solution. The unique solution of this system is x is equal to 2 minus 4a, y is equal to 4 upon a minus 1,
and z is equal to, y is equal to 0 and z is equal to 4 upon 8. So this is the unique solution of the system when the value of a is non-zero. Here I have did some mistake. This would be 2 minus 4 upon a. So value of x will come out to be 2 minus 4 upon a. So when the value of a is non-zero, then we are getting a unique solution of this linear equation system. Now what happens if value of a is 0? Let us come to that case. Now we are having the case number second when a is equal to 0. When a is equal to 0, this will mean that determinant of a is 0. Now the determinant of a is 0, then the system can be consistent or it can be inconsistent. But before that, a is equal to 0. Then if we use this equation number 3, let us say this is equation number 3. So if we put the value of a in equation number 3, what we will be getting here is a की वैल्यू 0 यहाँ पर पुट करेंगे, so we will get 0 into x plus 0 into y plus 0 into z is equal to 4. तो यहाँ से 0 is equal to 4. अगर हम a की वैल्यू को इस थर्ड इक्वेशन में पुट करें, then we are getting this result, but this result is not true. So this means a can never be equal to 0 because अगर a 0 हो गया तो this equation will not be valid. Hence we conclude that the value of a will always be non-zero in this case. It cannot have the value 0, and when a is not equal to 0, then we are getting a unique solution of the system of linear equation, and this unique solution is x is equal to 2 upon 4a, y is equal to 0, and z is equal to 4 by a minus 1. So this is the unique solution of this system when a is not equal to c. Now we have another question here. We have to first find out the value of AB and then we have to solve this equation. So first of all, let us find AB. The product AB will be look like this: 1 1 3 4 3 3 3 4 multiplied by 7 minus 1 minus 3 1 0 minus 3 0 1. This is simple matrix multiplication of two 3-order matrices. After multiplication, what we will be getting here is 7 minus 3 minus 3. So this will be 1. The next element would be minus 3 plus 3 0. Third element would be minus 3 0 3 will again be 0. For this element, 7 minus 4 minus will be 0. This will be minus 3 4 and 0. This will be 1. Minus 3 0 and 3, this would be 0. 7 minus 3 minus 4, this would be 0. Minus 3 3 0 would be 0. And minus 3 0 and 4, this would come out to be 1. So here what we have got is AB is equal to I. The value of AB is the identity matrix of order 3. So here we have found that the matrix AB comes out to be I. Now next we have to solve the system of linear equation. So for that we will reduce the system to a matrix equation, and this system, because it is having all the constants non-zero, this means this is a non-homogeneous system. And for this, first of all, we will be finding out the coefficient matrix. The coefficient matrix here would be, this is the coefficient matrix. And according to our question, this coefficient matrix matches with matrix P. So here we can write this coefficient matrix is the matrix P. Now the matrix X would be written like this, the matrix of unknowns. Let us name this constant matrix as C for this case because here the coefficient matrix is B. So if B is like this, X is given like this and C is this, then the system of linear equation can be written as Bx is equal to, now we are having two equations here. First equation is AB is equal to I and second equation is Bx is equal to C. So from here we have to find out the value of X, and as we know AB is equal to I. So what we can do here is, if we pre-multiply whole of this equation by A, what we will be getting here is A into Bx is equal to AC. This would be AB into X is equal to AC. And AB is equal to I, we know that. So from here, X is equal to AC. So this is the solution of our linear equation. X is equal to A into.
The matrix A is given as 1, 3, 3, 1, 4, 3, 1, 3, 4. And the matrix C is after solving after simple matrix multiplication, we are getting this matrix X as this matrix X was XYZ. This is coming out to be. So from here we got that X is equal to 0, Y is equal to 1, and Z is equal. So this means whole of this system of equation is having a unique solution which is given by these values of X, Y, and Z. So here we have not used the regular method of solving this system of linear equation because we were having the matrices A and B. So by using these, we have found out the direct solution for matrix X. So this was all about today's lecture. In today's lecture, we have dealt with the matrix method, and using this method, we have found out the solution for system of linear equations. First of all, we dealt about the theory part and the working steps for finding out the solution, the conditions when the solution of equation will be the infinitely many solution or unique solution or no solution at all. Means we have found out the consistency of this system of linear equations by using the concept of inverse. After that, we have used this concept for homogeneous system also, and we noted down that homogeneous system is always consistent. In the upcoming lectures, we will be dealing about with the special matrices. Till then, keep learning, keep practicing, and stay tuned.